Hello. Hello. as you know me, my name is Gautam Kumar Sa. Now I am pursuing PhD. First of all, I have taken a lot of class on YouTube on the topic of political science. Basically, I teach political science. And as you know that today we will discuss about democracy. Today's topic is democracy. As you know, nowadays democracy is a very fundamental issue. आज जो हम लोग देख सकते हैं डेमोक्रेसी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही वाइटल इश्यूज है आज। बेसिकली पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की चर्चाएं ज़्यादा होती है, जैसे कि लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में डेमोक्रेसी को लेकर के एक अलग ही कॉन्सेप्ट, एक चर्चाएँ अलग चल रही है कि कहीं ऐसा कहा जाता है कि आज डेमोक्रेसी जीवित है, कहीं ऐसा कहा जाता है ये मूर्खों का शासन है, कभी-कभी कहा जाता है ये लोगों का सच में ये लोगों के पास पावर है, कहीं पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, कहीं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, कहीं लिखित तौर पे डेमोक्रेसी है किंतु वास्तव में डेमोक्रेसी नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि डेमोक्रेसी है क्या? पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं डेमोक्रेसी क्या है और उसके बाद हम आगे जाएँगे। होपफुली उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही हो। मेरी आवाज़ समझ क्लियरली क्लियरली आ रही हो आप लोग के पास। तो डेमोक्रेसी जो है पहली बात तो द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस। डेमोक्रेसी जो है ग्रीक वर्ड डेमोस से आता है जिसका मतलब होता है पीपल। और क्रेटेरिया माने दो वर्ड को लेकर के डेमोक्रेसी बना है, एक डेमोस और दूसरा क्रेसिया। क्रेसिया का मतलब होता है रूल और गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस एंड द क्रेसिया। डेमोस दैट मीन्स द मीनिंग ऑफ द पीपल एंड क्रेसिया मीन्स द रूल एंड गवर्नमेंट। दस डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ द पीपल। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सभी लोग जानते हैं, ये रूल ऑफ द पीपल है। किंतु मैं इन चीजों के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि डेमोक्रेसी उतना बहुत ही पुराना है। डेमोक्रेसी आज से करीबन 2500 साल पुराना है। 5th सेंचुरी बीसी में ग्रीक में डेमोक्रेसी देखा गया था। आप बोलिएगा कैसे देखे थे, हम तो थे नहीं। बात भी सही है। तो 5th सेंचुरी बीसी बेसिकली एट द टाइम democracy, if you read Greek political thought, they are clearly mention about the direct democracy, clearly mention about the city state, and people participated in decision making process. People participated in public life. This is also the fundamental of democracy. That means democracy is called an executive concept because it can be classified in countless types or models and delineations. इसको लेकर के बहुत सारे थिंकर्स अलग-अलग बातें करते हैं, बहुत सारे थिंकर्स का डेफिनेशंस है। हम उन डेफिनेशंस के बारे में ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल कुछ चीज़ों को और क्लियर करते हैं। ऐसा जैसा हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द रूल बाय पीपल, डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट बाय द पीपल, डेमोक्रेसी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। We all know democracy. Sometimes it is made of two words, demos and the Krasia or a Kratos or a Christian. Okay, demos that means the people, Kratos means power, Krasia means the same rule. Okay, then democracy means the rule by the people which gives true legitimacy to the government. Uh, Now, there are a lot of definition we know. Abraham Lincoln clearly say democracy is a government of the people. What Abraham Lincoln say? Abraham Lincoln say democracy is the government of the people, by the people, and for the people. Okay. Seeley says democracy is a government in which everyone has a share. Democracy is a government. ओके, बेसिकली सीले से डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट है जहां पर एवरीवन हैज अ से। डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एवरी मैन पार्टिसिपेट। इतना ही नहीं, अगर हम थोड़ा और जाए तो डेमोक्रेसी को लेकर के अगर थोड़ा और चर्चाएं करें तो
पेरिकल्स कहते हैं, पेरिकल्स 450 बीसी में कहते हैं कि स्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन एथेंस इन 450 बीसी, हेंस पेरिकल्स इज कॉल्ड द फादर ऑफ डेमोक्रेसी. Pericles called is called the who is the father of democracy? Then we can say Pericles is called the father of democracy. The Greek considered democracy as the power of the people. Okay. Herodotus first used the term democracy. Herodotus first used the term democracy. Valiant thinkers, democracy is government of the people, for the people, and by the people. Valiant says democracy is government of the people, for the people, and by the people. And you all know the most famous definition. This definition is also given by Abraham Lincoln in 1862 in his Gettysburg Address. He said democracy is government of the people, by the people, and for the people. Um, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी को लेकर अब्राहम लिंकन क्लियरली कहते हैं कि ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, माने जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। ঠিক মানে জনগণের শাসন, জনগণ শাসন করবে আর জনগণের জন্য। তাহলে ডেমোক্রেসি মানেটাই হয় গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল এন্ড ফর দ্য পিপল। एविडेंसी कहते हैं डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द लार्जर पोर्शन, vast majority of the country rules. Now, Seeley, already I have told about Seeley's definition, what Seeley said. Seeley clearly say, somewhere it is written as S-E-E-L-E-Y, and some book wrote S-I-L-E-Y. Both are correct. Democracy is a form of government in which every individual participates. Now, Lord James Bryce, in his book Modern Democracies, which is published in 1921, he wrote, democracy is that form of government in which people express their will in the form of votes. Lord James Bryce, in his book 1921, clearly said, democracy is that form of government in which people express their will in the form of votes. Joseph Schumpeter, what Joseph Schumpeter say? Joseph Schumpeter ने कहा कि democracy is an institutional method for arriving at political decision. डेमोक्रेसी क्या है? एक इंस्टीट्यूशनल मेथड है क्या करने के लिए, पॉलिटिकल डिसीजंस को लिया जा सके, इन विच, जिसमें इंडिविजुअल एक्वायर पावर बाय मींस ऑफ अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल फॉर द पीपल्स वोट। तब जोसेफ सम्पीटर क्या कहते हैं? जोसेफ सम्पीटर तो क्लियरली ने उन्होंने कह दिया कि डेमोक्रेसी एक इंस्टीट्यूशनल मेथड है जिसके द्वारा डिसीजंस, पॉलिटिकल डिसीजंस को लिया जा सकता है, जहां पर इंडिविजुअल्स पावर एक्वायर कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल के द्वारा, पीपल्स के वोट के द्वारा इंडिविजुअल के पास पावर है ताकि वो पॉलिटिकल डिसीजंस को ले पाए। और वो कैसे पावर आ रहा है? पीपल्स के वोट के द्वारा। मैंने अल्टीमेटम द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी दैट मीन्स, यहाँ पर जोसेफ सम्पीटर का डेफिनेशन पढ़ने से एक बात तो क्लियर हो जा रही है हमें कि ये सिस्टम ऑफ इलेक्टेड लीडर्स की बात करिए, जहां पर इलेक्टेड लीडर्स जो गवर्नमेंट होंगे, जो पॉलिटिशियंस होंगे, जिनको हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं। दैट मीन्स अल्टीमेटम वी आर द सॉवरेन, वी इलेक्ट आवर गवर्नमेंट, वी इलेक्ट आवर लीडर्स हु रिप्रेजेंट अस। बट बाकी सब तो इतिहास आप जानते ही हैं। बर्नार्ड क्रिक, उनका कहना है कि इन द वर्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स डेमोक्रेसी इज परहैप्स द मोस्ट प्रोमिशियस वर्ड। एक प्रोमिशियस वर्ड है ये। गिवोनी साटोरी, उनके बुक डेमोक्रेटिक थ्योरी, गिवोनी साटोरी का बुक का नाम क्या है? डेमोक्रेटिक थ्योरी, 1958 में लिखे थे उन्होंने। गिवोनी साटोरी, इन्होंने अपना बुक लिखा 1958 में, डेमोक्रेटिक थ्योरी। इस बुक में गिवोनी साटोरी जो है वो क्या बताता है कि डिस्कस डेमोक्रेसीज मीनिंग इन द 20th century, स्ट्रेस conceptual clarity for developing countries. Because of this reason, the present situation has been called the age of democratic confusion. बात तो सही है कि आज जो है एक एज ऑफ डेमोक्रेटिक कंफ्यूजन की बात हो रही है। यहाँ इन्होंने डेमोक्रेसी को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, फिर दूसरा उन्होंने कहा सोशल डेमोक्रेसी, फिर उन्होंने कहा इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, फिर उन्होंने इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात की।
कहने का मतलब है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब है प्योरली पॉलिटिकल जो हो, सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है एडवोकेटेड बाय टॉकविले एंड ब्राइस, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी मीन्स एसोसिएटेड विद सिडनी वेब, जीडीएच कॉल, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है ये सब पॉलिटिकल है। तो इसको लेकर के और भी डेफिनेशन है, जैसा कि एच जी वेल्स जो है उन्होंने कहा द 20th century को एज ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया। नाउ द क्वेश्चन अराइज विच सेंचुरी इज नॉन एज एज ऑफ डेमोक्रेसी, द then 20th century is known as age of democracy. After 1950 democracy had no opponent left because it came to be seen not merely as a form of government but also as a form of state and a form of society. Then Gidding says democracy is not merely a form of government, but also a form of state, society, or combination of all three. Then thus democracy is not only a system of government, but also a social system. तब हम यहाँ से क्या समझ में आया हमें, डेमोक्रेसी सिर्फ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है बल्कि सोशल सिस्टम भी है, वे ऑफ लाइफ है एंड अ स्टेट ऑफ माइंड और एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। ये क्या है डेमोक्रेसी तब, अ सोशल सिस्टम, अ वे ऑफ लाइफ एंड अ स्टेट ऑफ माइंड और एटीट्यूड। थोड़ा और चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं मैकफर्सन क्लियरली सेड डेमोक्रेसी इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू रूल और मेक law by different methods and taking political decisions. मैकफर्सन ने क्या कहा, डेमोक्रेसी इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू रूल और मेक लॉ बाय डिफरेंट मेथड्स एंड टेकिंग पॉलिटिकल डिसीजंस। ये मैकफर्सन ने कहा। तो और भी डेफिनेशन जो है हम लोग उनके बारे में और थोड़ा सा चर्चा करेंगे। डेमोक्रेसी जो है प्रिवेंट्स रूल ऑफ द ऑपरेशंस, ये क्या है, ये जो ऑपरेशंस जो है उसके रूल्स को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। फोस्टर्स ह्यूमन डेवलपमेंट, और क्या काम करते हैं, फैसिलिटेट प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, और वॉर को प्रिवेंट करने का भी काम डेमोक्रेसी करते हैं। आज जो वॉर हो रही है ना, अब बताइए अगर डेमोक्रेसी जहां पर रहेगा वहां पर वॉर क्या होगा, पीपल जो है वो सरकार को एक आईना दिखा सकते हैं कि आप अगर वॉर की ओर जा रहे हैं तो हम अगली बार आपको इस सरकार में नहीं रखेंगे। ये एक और कभी कभी वॉर के लिए पीपल ही प्रोत्साहित भी करते हैं, किंतु डेमोक्रेसी खासकर इस आज जो लिबरल सोसाइटी है, आज आज का जो दौर ग्लोबलाइजेशन का एज है, यहाँ पर डेमोक्रेसी का रोल बढ़ जाता है। डेमोक्रेसी का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रह जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर वॉर को रोकने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, प्रोटेक्शन, इंडिविजुअल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए डेमोक्रेसी मायने रखता है। तो अगर हम और बातों को समझने की कोशिश करें तो डेमोक्रेसी जो है ये डेमोक्रेसी अगर बात करें इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे कैसे डेवलप होते हैं इसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो पहली बात तो स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए डेमोक्रेसी को लेकर के जेएस मिल जो है कॉन्सिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लिखते हैं, जहां पर कहते हैं कि डेमोक्रेसी कॉम्पेल्स डिसीजन मेकर्स टू टेक इनटू अकाउंट इंटरेस्ट, opinions and right of the most of the people. Epistemologically, democracy brings in a number of varied views in the process, which allows decision makers to pick up the best idea. Democracy also help in character building of citizens as it inculcates qualities like rationality, autonomy, and independent thinking. Then it also says about the rule of law, written constitutions, human rights, independent media, and judiciary separation of power. Uh, Now, democracy डेवलपमेंट ऑफ विमेन सफरेज, बेसिकली हम लोग यहाँ पर ये भी देखेंगे, थोड़ा सा इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। पहली बार जो वीमेन्स को जो राइट मिला, वोट देने का अधिकार जो मिला, डेमोक्रेसी में वीमेन्स को अधिकार मिला वोट देने का, पहली बार अगर देखा जाए न्यूजीलैंड में 1893 में मिला था। फर्स्ट टाइम कहाँ मिला, न्यूजीलैंड में 1893 में मिला। उसके बाद आपका अगर देखें तो यूएसए में 1920 में मिला, ब्रिटेन में 1928 में मिलता है, फ्रांस में 1945 में मिलता है, फ्रांस में 1945 में मिलता है, स्विट्जरलैंड में 1971 में मिलता है, स्विट्जरलैंड में 1971 में मिलता है। तो न्यूजीलैंड 1893, यूएसए 1920, ब्रिटेन 1928, फ्रांस 1945, स्विट्जरलैंड 1971।
तो हमने क्या कहा, न्यूजीलैंड 1893, यूएसए 1920, ब्रिटेन 1928, फ्रांस 1945, स्विट्जरलैंड 1971। अगर हम थोड़ा और देखें तो फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी के पीछे का फिलोसॉफी क्या है, फिर इसके पीछे का कारण क्या है। तो डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू हम लोग देख सकते हैं, डेमोक्रेसी एज अ सोशल सिस्टम भी हम लोग देख सकते हैं, डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ। तो पहले हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू। डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू की अगर हम बात करेंगे, डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू considering the individuals as a unit, considering the individuals as a unit, belief in the dignity of the individual, providing freedoms and rights to the people. बेसिकली डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू अगर हम देखें तो किसको कंसिडर कर रहा है, इंडिविजुअल को एक यूनिट के रूप में देख रहा है, बिलीव इन द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। और किसमें बिलीव कर रहा है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल के डिग्निटी में बिलीव कर रहे हैं, किसमें बिलीव कर रहे हैं, इंडिविजुअल के डिग्निटी में ये बिलीव कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग फ्रीडम एंड राइट्स टू द पीपल, और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रीडम और राइट्स को। डेमोक्रेसी एज अ सोशल सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू इंडिविजुअल को एक यूनिट के रूप में देख रहे हैं, प्रत्येक इंडिविजुअल के डिग्निटी में बिलीव कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रीडम को, पीपल्स के राइट को। अगर हम और बात करें डेमोक्रेसी को एक सोशल सिस्टम के रूप में देखें तो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स और रिलीजन। यहाँ पर किसी को उसके कास्ट, उसके सेक्स, उसके रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, टू एलिमिनेट प्रिविलेजेस इन सोसाइटी। If we go further, then democracy as a way of life. যখন আমরা দেখতে পারি democracy as a way of life, liberal supporters of the classical democracy basically portrayed democracy as a way of life. Thinkers like Lusky, Smith, mm, Bryce see democracy as a way of life. Democratic way of life means being tolerant towards the view of others. That means democracy as a way of life being tolerant. দেখো এক বাত হমে মানে একটা জিনিস মনে রাখবে, ডেমোক্রেসি বলতে গিয়ে আমাদের টলারেন্ট থাকতে হবে। অন্য কেউ যদি কোনো মিসগাইড করছে তাও আমাদের একটু শান্তভাবে থাকতে হবে। দ্যাট মিন্স অ্যাকর্ডিং টু মিল, রেসপেক্টিং দ্য ভিউজ অফ আদার্স ইজ দ্য democratic way of life. Now, democracy as a system of governance, limited constitutional rules, rule of consent, responsible rule, representative rule. The democratic way of life implies being tolerant towards the views of others. The democratic way of life implies being tolerant towards the view of others. According to Mill, respecting the view of others is the democratic way of life. एक मिनट। তাহলে আমরা কি কি দেখলাম এখন? উম, আমরা দেখেছি ডেমোক্রেসি অ্যাজ আ ভ্যালু, ডেমোক্রেসি অ্যাজ আ সোশ্যাল সিস্টেম, ডেমোক্রেসি অ্যাজ আ ওয়ে অফ লাইফ, ডেমোক্রেসি অ্যাজ আ সিস্টেম অফ গভর্নেন্স। Wait, I am sharing first, then I will take the class. So some some people will join.
ना अब आप लोग देखते हैं हम लोग कहाँ तक अभी तक पढ़े। अभी हम लोग डेफिनेशन ही पढ़ रहे थे। हम लोग डेमोक्रेसी का डेफिनेशन पढ़े। हम लोगों ने अलग अलग जो लोगों ने कहा, अलग अलग लोगों के जो कोटेशन थे उनको हम लोगों ने कहा। पेरिसल्स के बारे में, हेरोडोटस के बारे में, वेलियन, एंशिएंट ग्रीक के आप लोग देख बैक करके देख लीजिएगा। बहुत जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे होंगे या ज्वाइन कर चुके होंगे, बहुत लोग ज्वाइन किए भी होंगे, नहीं भी किए होंगे। ठीक है, कोई नहीं। आप लोग शुरुआत से अगर देखिएगा तो आप लोग को बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, ऑल द कोर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक थ्योरीज लाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर पावर अकॉर्डिंग टू एंथोनी एल्बेस्टर ने कहा कि दिस refers to a situation where both power and authority rest in the hands of the people. Then democratic government is fundamentally different from dictatorship. In dictatorship, decisions are imposed on the people without regard for their consent. डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि डिसीजन जो होता है पीपल के ऊपर बिना उनके कॉन्सेंट के, माने पीपल्स की राय क्या है उसको बिना जाने क्या करते हैं, डिक्टेटरशिप में कॉन्सेप्ट को दे दिया जाता है। दैट में डिक्टेटरशिप में बेसिकली उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझने की कोशिश की जाती है और तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि उसके कॉन्सेप्ट को बिना समझे क्या किया जाता है, उसके कॉन्सेंट, जैसे कि जो पीपल्स है उसके कॉन्सेंट को समझा नहीं जाता है। और तो बोला जा सकता है कि एंथोनी अर्बलस्टर ने कहा दिस रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर बोथ पावर एंड अथॉरिटी रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। देन दिस बेसिकली ये कहा जाता है यहाँ पर कि डिसीजंस आर इम्पोज्ड ऑन द पीपल विदाउट रिगार्ड फॉर देयर कंसेंट, वेयर एज इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को और थोड़ा सा गहराई में जानने की कोशिश करते हैं। माने जितनी गहराई में जाएंगे उतना डेमोक्रेसी हमारे लिए क्लियर होगा, उतना हम उन चीजों को और ज्यादा बारीकी से समझ सकते हैं। माने जितना डीपर जा सकते हैं। दैट मीन्स whenever we read about democracy, first of all we have to clarify it already stated about the definition of democracy। डेमोक्रेसी के डेफिनेशन को ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुका, अभी करीबन 15-20 मिनट से ऊपर हो गया है। और अब जो है हम लोग इसको बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटरशिप से अलग है। हाउ इज इट फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम डिक्टेटरशिप? First of all, in dictatorship, basically decisions are imposed on the people without regard for their consent। माने पीपल के कॉन्सेंट के बिना ही उसके ऊपर थोप दिया जाता है। वेयर एज इन डेमोक्रेसी इट इज ensured that those who hold power are accountable to the people। That means in fact in a democracy the people are the ultimate source of power। people क्या है? ultimate source of power है, राइट है। पीपल आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, पीपल के पास ही पावर है। एंड कॉन्सेंट ऑफ द गवर्न लेजिटिमाइज गवर्नमेंटल अथॉरिटी। दैट मीन्स जब थोड़ा और आगे हम जाते हैं तो इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम द अल्टीमेट सोर्स ऑफ रूल और अथॉरिटी लाइज इन द मासेस। अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें तो जो अल्टीमेट सोर्स है ना रूल का, अथॉरिटी का, वो क्या है? मासेस के ऊपर है। सो द पब्लिक पॉलिसी is framed and implemented according to the will of the people and for the promotion of their interests। The United Nations General Assembly in 2005 passed a resolution and declared democracy as a universal value। According to W.H. Hawking, democracy unites the conscious and the subconscious man। W.H. Hawking ने क्या कहा? Democracy unite the conscious and the subconscious man। What democracy is not? Then now the question arises, what democracy is not then? Democracy क्या नहीं है? It is not social economic uniformity। Democracy social economic uniformity नहीं है। Democracy क्या नहीं है? Social economic uniformity नहीं है। It is not simply liberal capitalism and the right to property। ये liberal capitalism और right to property भी नहीं है। लिबरल कैपिटलिज्म भी नहीं है, प्रॉपर्टी का अधिकार भी डेमोक्रेसी नहीं देता है। इट इज नॉट मेनली मिनिमल गवर्नमेंट की भी बात नहीं करता है, तो लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल गवर्नमेंट करता है, डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी।
It is not just stability. It is not just about stability, peace, and law and order. Then now the question is, then what is democracy? Now, liberal in different approaches to democracy. Liberal individualist model in this democracy is restricted only to the political sphere. Democracy is restricted only to the political sphere. Radical democracy view any decision that liberal individualist model क्या कहता है? डेमोक्रेसी जो है किसकी और बात का इशारा कर रहा है? पॉलिटिकल स्पेयर की बात कर रहा है. लिबरल डेमोक्रेसी में किसकी बात की जा रही है? पॉलिटिकल स्पेयर की बात की जा रही है. वहीं पे आपका रेडिकल डेमोक्रेसी में किसकी बात की जा रही है? व्यूज एनी डिसीजन दैट अफेक्ट पीपल्स लाइफ as part of their fundamental rights. Views any decision that affects people lives as a part of their fundamental rights. वहीं पर सोशलिस्ट अप्रोच कहते हैं कि सोशलिस्ट कहते हैं कि along with political democracy, social democracy, economic democracy भी जरूरी है. फेमिनिस्ट तो कहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फैमिली लाइफ. ये प्राइवेट डोमेस्टिक स्पेयर में फेमिनिस्ट को डिमांड करते हैं वीमेन्स को राइट मिले. वहीं पर लैंड्स माइंड इन सम small cantons of Switzerland, people gather together in open assemblies and make decisions by open voting on public issues. Now, democracy तो बहुत सारे हैं भाई. इतना तो ऐसा है नहीं कि ऐसे पढ़ लेंगे तो खत्म हो जाएगा. नहीं. प्योर डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एक और, दूसरी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. Pure democracy, it is also known by the other names like classical participatory democracy and radical democracy. Pure democracy को हम लोग classical participatory democracy भी कहते हैं. Radical, ये basically city state जो था ग्रीस में वहां पर prevail था, वहां पर देखने को मिला. In the modern era, Switzerland is called the ancestral, जो pure democracy को हम लोग direct democracy भी कह सकते हैं. बेसिकली ये जो कहाँ देखने को मिला आपका सिटी जो क्या बोलते हैं सिटी स्टेट जो है एशियन ग्रीस के वहाँ. इन द मॉडर्न एरा स्विट्जरलैंड इज आल्सो कॉल्ड द एंसेस्ट्रल होम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. मॉडर्न एरा में जो मॉडर्न एरा की अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड इज कॉल्ड द एंसेस्ट्रल होम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. ये रूसो इसके सपोर्टर हैं. डायरेक्ट एंड कंटिन्यूअस पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स की बात करता है ये. नो डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स एंड द स्टेट. ये स्मॉल कम्युनिटी में सुटेबल है. स्मॉल कम्युनिटी में सुटेबल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी. वहीं पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करें इसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहते हैं तो इट केम इनटू प्रैक्टिस ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन. इट इमर्ज आफ्टर ग्लोरियस रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के सपोर्टर जेएस मिल है. अपने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का बुक में उन्होंने बताया दिस इज डेमोक्रेसी इन पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल एंड सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं. अगर हम थोड़ा सा और चर्चा की और बढ़े तो बहुत की कुछ चीजों को हम लोग देखेंगे. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं. इट इज लिमिटेड एंड एज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन. रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? चूजन थ्रू इलेक्शंस. रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं? चूजन होते हैं इलेक्शंस के द्वारा. बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स के द्वारा. ये इंडिया, यूएसए, ब्रिटेन में देखने को मिलता है. वहीं पर अगर हम बात करें डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये ग्राम सभा जैसे जगह पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है. ये इनिशिएटिव कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में किया गया. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कुछ मेथड को फॉलो की जाती है. उस मेथड के बिना डायरेक्ट डेमोक्रेसी सक्सेस ही नहीं हो सकता है. तो वो मेथड क्या है? वो कौन सी मेथड है जिसके द्वारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी को ये लगाया जाता है? माने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को जमीनी स्तर पर किया पॉसिबल है. वो मेथड है इनिशिएटिव. इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल. मतलब कि इट गिव्स पीपल पावर टू प्रपोज अ लेजिस्लेशन. इट गिव्स पीपल पावर टू प्रपोज अ लेजिस्लेशन which should be discussed by the legislature. माने पहल लोगों को यह शक्ति प्रदान करता है कि ऐसे किसी कानून को प्रस्तावित कर सके जिनकी चर्चा विधायिका में की जानी चाहिए. माने initiative is a means by which a petition is signed by a certain member of registered voters, forcing a public to vote on a proposed statics, constitutional amendment, ordinance
consideration of the passage of the bill. तो इनिशिएटिव क्या है, ये स्विट्जरलैंड में है. इट इज द स्वॉर्ड ऑफ द पीपल. लॉ मेकिंग इज इनिशिएटेड बाय द पीपल. इसमें पीपल क्या होता है, लॉ मेकिंग. पीपल ही लॉ बनाते हैं. कौन लॉ बनाते हैं, पीपल लॉ बनाते हैं. उतना सरल नहीं है. मतलब यह शक्ति ऐसा है, कानून को प्रस्तावित कर सके, ये चर्चा विधायिका की जानी चाहिए. यहाँ पर पीपल वोट देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर के ऑर्डिनेंस, पीपल डायरेक्टली. दूसरा है रिकॉल. रिकॉल का मतलब तो बहुत आसान है, वापस बुला लेना, मतलब कॉलिंग बैक द रिप्रेजेंटेटिव. आल्सो प्रिवेलेंट इन सम अमेरिकन स्टेट. That means recall is the power in the hands of the people through which they can remove their policymaker if their performance is not up to the mark. ये राघव चड्ढा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राघव चड्ढा जो है रिसेंटली पार्लियामेंट में एक बात कह रहे थे कि अगर कोई एमपी काम नहीं कर रहे हैं, अगर कोई एमपी किसी काम को नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो वो डायरेक्टली रिकॉल कर सकता है. क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं. देखिए कितनी अच्छी बात है. अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली रिकॉल कर सकते हैं. तो कॉलिंग बैक द रिप्रेजेंटेटिव आल्सो प्रिवेलेंट इन सम अमेरिकन स्टेट. मतलब रिकॉल इज द पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल थ्रू व्हिच दे कैन रिमूव देयर पॉलिसी मेकर इफ देयर परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क. ये राजस्थान के अर्बन बॉडीज में भी देखने को मिलता है, वहां पर भी रिकॉल कर दिया जाता है. वहीं पर अब अगला आते हैं, द फर्स्ट रिकॉल मेजर वाज एडॉप्टेड बाय द लॉस एंगल्स. लॉस एंगल्स इन 1903, 1903 में पहली बार रिकॉल मेथड को, मेजर्स को एडॉप्ट किया था लॉस एंगल्स ने. फिर आते हैं तीसरा मेथड क्या है, तीसरा है आपका प्लेबिसाइड्स. प्लेबिसाइड्स क्या होता है, देखिए प्लेबिसाइड की अगर बात करें, दिस मेथड इज एडॉप्टेड ऑन द इश्यूज ऑफ द सेपरेशन और ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट. मतलब an important question is put in front of a citizen for their approval or disapproval. कोई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिटीजन्स के पास रखा जाता है अप्रूवल के लिए और डिसअप्रूवल के लिए. या तो सिटीजन्स अप्रूव करेंगे या डिसअप्रूव. माने जनमत संग्रह में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न लोगों के समक्ष उनकी सहमति या असहमति हेतु रखा जाता है. মানে জনগণের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে রাখা হয় তার কনসার্ন করার জন্য বা তার ডিসএগ্রি করার জন্য, বা হয়তো কনসার্ন নাও করতে পারেন. দ্যাট মিন প্লেবিসাইডস আর ইউজড মোস্ট অফেন টু ডিটারমাইন. Then referendum, it is the shield of power. Referendum is the shield of power. Okay, that means public decision. Referendum prevalent in Switzerland, France, Australia, Belgium. Referendum is a practice of referring measures passed upon by the legislative bodies for acceptance or rejections. A referendum may be mandatory. A referendum may be mandatory when the law or the constitution direct authorities to hold a referendum on specific matters. A referendum may be mandatory when the law or the constitution direct authorities to hold referendum on specific matters. This method is adopted for constitutional amendment. Now in the representative democracy, basically in representative democracy, it is a liberal democracy, more than one political party here, universal adult franchise, periodic election, one person, one vote, one vote. Bentham has said one person, one vote, one vote. Political position is not the monopoly of a special class. Political position, what I am saying, political position is not the monopoly of a special class. System of civil liberties, independent and free judiciary, limited and constitutional government, rule of law. French Fukuyama writes in his book The End of History and the Last Man. French Fukuyama wrote a book End of History and the Last Man, 1992. ফ্রেঞ্চ ফুকিয়ামা একটা বই লিখেছিলেন এন্ড অফ হিস্ট্রি অ্যান্ড দ্য লাস্ট ম্যান 1992 সালে. দেয়ার ইজ নো ক্রেডিবল অল্টারনেটিভ টু লিবারাল ডেমোক্রেসি. আফটার দ্য ফল অফ কমিউনিজম ইট হ্যাজ বিকাম দ্য মোস্ট accepted system of governance. There is no credible alternative to liberal democracy.
কমিউনিজম ফলের পর এটাই থাকবে। রেফারেন্ডাম, we all know it refer to the process in which vote directly cast their vote. ऑलरेडी सेड। ब्रेक्सिट इन द यूनाइटेड किंगडम, जैसे कि ब्रेक्सिट में हुआ यूनाइटेड किंगडम में, जो आपका यूके से अलग हुआ, यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ। Many other country adopt this method of constitutional amendment. Plebiscite is a type of referendum. जूनागढ़ का केस में मर्जर में वहां पहले ये देखने को मिला था। थोड़ा सा हम लोग और चर्चा करें तो एक waves of democracy. Waves is mentioned at last in democratization, not here. First of all, Samuel P. Huntington has described three waves of democracy. Samuel P. Huntington has described three waves of democracy, right? ও উনকা এক বুক থা, স্যামুয়েল পি হান্টিংটন নিজের একটা বই লিখেছিলেন যার নাম হয় দ্য থার্ড ওয়েভ, ডেমোক্রেটাইজেশন ইন দ্য লেট 20th সেঞ্চুরি। তো 20th সেঞ্চুরি 1991 একটা বই লেখেন যার নাম হয় দ্য থার্ড ওয়েভ, ডেমোক্রেটাইজেশন ইন দ্য লেট 20th সেঞ্চুরি। এই বইতে স্যামুয়েল পি হান্টিংটন basically describe three waves of democracy. What is the three waves? First, long wave 1828 to 1926, and the first reverse wave 1922 to 1942. Second, short wave 1943 to 1962. Second, reverse wave 1958 to 1975. The third wave began in 1974, under which democracy came to countries like Spain, Portugal, Eastern Europe, and Latin America. Now we will discuss the whole things broadly. First of all, first wave in 1828 to 1926. First, we will discuss 1828 থেকে 1926 পর্যন্ত ফার্স্ট ওয়েভ, বেসিক্যালি নন অ্যাজ দ্য ফার্স্ট লং ওয়েভ। During this period, when we see during this period, democracy was established in Western Europe and the USA. Democracy এখানে কোথায় ছিল এই ফার্স্ট ওয়েভে? Western Europe and USA, democracy developed in connection with industrialization and liberal state in Western countries. During this wave, universal adult suffrage was recognized in countries such as Britain, and governments were made responsible to the people. माने এই ওয়েভের মধ্যে इस वेव में क्या किया जा रहा है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वाज रिकॉग्नाइज्ड इन कंट्रीज। बेसिकली यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या होता है? इसमें एक वयस्क मताधिकार की बात करते हैं, जहां पर মানে এখানে একটা বয়সের সময়, একটা বয়সটা রাখা হয়েছে, এই বয়সের সময় ভোট দেওয়া যেতে পারে। তাহলে ওই ব্রিটেনে ফার্স্ট টাইম, ব্রিটেনে এই সময়, এই যে ফার্স্ট ওয়েভের সময় ব্রিটেনে गवर्नमेंट वेयर मेड रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। देन फर्स्ट रिवर्स वेव। अब ये क्या होता है रिवर्स वेव? माने यहां डेमोक्रेसी वापस से खत्म होगा, डेमोक्रेसी आया फिर डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक पहले, बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, डेमोक्रेसी वाज रिप्लेस्ड बाय डिक्टेटरशिप इन कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली एंड पुर्तगाल। तो जर्मनी, इटली और पुर्तगाल में क्या हुआ? डेमोक्रेसी के जगह में क्या आ गया? डिक्टेटरशिप, जैसा कि हम लोग को पता है। और there is the rise of Nazism, fascism and communism weakened democracy during this period. लेकिन 1942 के बाद फिर वापस से सेकेंड वेव आता है, जहां से डेमोक्रेसी वापस से फलने फूलने लगेगा। माने नाउ अगेन डेमोक्रेसी will emerge, democracy is spread to the third world countries. Now এবার এখান থেকে ডেমোক্রেসি থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজতে স্প্রেড হবে, which had been under colonialism and imperialism. In Italy and West Germany, democratic systems were re-established after the defeat of fascism and Nazism. Fascism and Nazism, নাজিজমে যখন পরাজয় হয়েছে, যখন হেরে গিয়েছে, তারপর থেকে ওয়েস্ট জার্মানি আর ইটালিতে আগেন ডেমোক্রেসিটা এস্টাবলিশ হচ্ছে। In Asia, the newly independent countries such as India, Pakistan, Sri Lanka, Indonesia adopted democracy. ঠিক, ইন্ডিয়া অ্যাডপ্ট করেছে ডেমোক্রেসি, পাকিস্তান করেছে, কিন্তু পাকিস্তান সেভাবে ডেমোক্রেসি সেভাবে সাকসেস হয়নি। ইন্ডিয়াতে পাকিস্তানের তুলনা অনেক বেশি সাকসেস হয়েছে ডেমোক্রেসি, তুলনামূলকে অনেক ভালো এখানে ডেমোক্রেসি ক্ষেত্রে। in Africa, countries like Ghana and
Tanzania, freed from the chains of colonial rule, embraced democracy. Like in the first wave of democracy, the emergence of democracy in western country was directed against conservatism. ताहले फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेसी वेस्टर्न कंट्री में स्टार्ट हुआ था, कंजर्वेटिज्म, हायरार्किकल सोसाइटी, एब्सोल्यूट मोनार्की के लिए डेमोक्रेसी डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ, अब उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या देखने को मिल रहा है कि डेमोक्रेसी डेवलप हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के। तब यहाँ डेमोक्रेसी का जो मेन एम क्या हो रहा है, वीकेन द पावर ऑफ द स्टेट और स्ट्रेंथन द पावर ऑफ सिविल सोसाइटी। तब अगर हम सेकेंड वेव की और थोड़ा सा चर्चा करें तो ये डेवलपिंग कंट्री वाज अपोजिट इन दिस countries democracy was adopted mainly to promote economic development। अब सेकेंड वेव में क्या हो गया, डेवलपिंग कंट्रीज में थोड़ा अलग हो गया। जो पहले डेवलप कंट्री जो था वो कंजर्वेटिज्म, हायरार्किकल सोसाइटी, एब्सोल्यूट मोनार्की के अगेंस्ट में वेस्टर्न कंट्रीज में डेमोक्रेसी डेवलप हुआ था। जैसा कि सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं, डेमोक्रेसी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ का रिजल्ट था। डेमोक्रेसी स्टेट की पावर को कम कर रहा है, लेकिन सेकेंड वेव थोड़ा सा यहाँ चेंजेस हो रहा है। सेकेंड वेव क्या कर रहा है, डेमोक्रेसी यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज में स्टार्ट हुआ, बेसिकली प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। What it promote? It promote economic development. Here the role of the state remained central and dominant, unlike the primacy of civil society in the first wave. Now second reverse wave, এবার কি হচ্ছে, during 1960s democracy collapsed in most third world countries। স্বাভাবিক, একটা যখন যখন ডেভেলপ করবে একটা সময় থাকবে যে সময় সে নষ্ট হতে পারে, সে সময় সে আর থাকবে না, ডিকে হবে সেই সময়টা। তাহলে কেস অফ ডেভেলপিং কান্ট্রিজ যে সেকেন্ড ওয়েভ ডেমোক্রেসিটা শুরু হয়েছিল, এবার রিভার্স যাবে একটু। দ্য প্রসেস অফ ডেমোক্রেটিক ট্রান্সফরমেশন ইন ডেভেলপিং কান্ট্রি ওয়াজ নাইদার সিম্পল নর স্মুথ। এভরিওয়্যার চেঞ্জেস ওয়ার টেকিং প্লেস এট ডিফারেন্ট স্পিড। সব জায়গায় যে আলাদা আলাদা ভাবে চেঞ্জেস হচ্ছে, জায়গা চেঞ্জ হবে। 1960 সময় তো আমরা সবাই জানি যুদ্ধ একটা, একদিকে কোল্ড ওয়ার হয়ে যাচ্ছে, আর একদিকে যুদ্ধ চলে যাচ্ছে। ইন্ডিয়া 1960 এর সময় ইন্ডিয়া চায়না যুদ্ধ আমরা দেখলাম। তারপর অন্য বাইরে দেশগুলো যে কোল্ড ওয়ার দেখা যাচ্ছে। তাহলে সেই সময়কার শুধু এটাই নয়, অনেক ওয়ার্ল্ড ইকোনমিটা চেঞ্জ হচ্ছে। সেই সময় একটা স্ট্যাগনেশন পিরিয়ডটাও ফেস করা হলো। সেই সময় ইকোনমিটা চায়না একদিকে, সেই সময় চায়না নিউ ইকোনমিক পলিসিটা ইমপ্লিমেন্ট করেছে নিজের দেশে 1970s বেসিক্যালি। কিন্তু এইদিকে অনেক দেশ পিছিয়ে পড়ে যাচ্ছে সে জায়গা। তো তাহলে এই জায়গাতে কিছু থাকবে। এভরিওয়্যার চেঞ্জেস টেক প্লেস মাল্টিপল ডাইরেকশনস, yet for the past 5 decades there has also been a struggle for the establishment and preservation of democracy. Rawls Dendroff described the irony of three clocks. Irony of three clocks basically Rolf Dendroff describe democracy as the irony of three clocks. Some people read as irony and some read as a irony. तो जो irony of Dendroff's three clock का मतलब the clock of politics and changes in law fastest establishing that means clock of politics and changes in law बहुत तेजी से बढ़ रहा है। माने establishing constitutional political structure may took only a few months। মানে কিছু সময়ের মধ্যেই কনস্টিটিউশনাল পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার এস্টাবলিশ হয়ে যাচ্ছে একটা কান্ট্রিতে। ক্লক অফ দ্য ইকোনমি অ্যান্ড বিল্ডিং অফ দ্য মার্কেট স্লোয়ার, কিন্তু ইকোনমি আর মার্কেট খুবই স্লো কাজ করছে। বিল্ডিং অফ দ্য ফাউন্ডেশন অফ মার্কেট ইকোনমি মে টেক 5 to 6 years। কনস্টিটিউশনাল পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার তো কিছু মাসের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মার্কেট ইকোনমিটা তৈরি হতে 5 থেকে 6 বছর লেগে যাচ্ছে। তাহলে ক্লক অফ সিভিল সোসাইটি, সিভিল সোসাইটি বলতে গিয়ে যে আমরা বুঝি, তাহলে সিভিল সোসাইটি একটা নাগরিক সমাজ তৈরি এত তাড়াতাড়ি তো হবে না। সে একটা দিকে 10 বছর 20 বছর লাগতে পারে একটা নাগরিক সমাজটা তৈরি হতে। তাহলে একটা ভ্যালু, অ্যাটিটিউড, হ্যাবিটস অফ সিভিল সোসাইটি এটা তৈরি হতে 10 বছর থেকেও বেশি লাগতে পারে। তাহলে এই যে আইরনি অফ ডেনড্রফ থ্রি ক্লকস যে উনি বললেন, ডেমোক্রেসিকে এইভাবে ডিসক্রাইব করলেন উনি। তারপর অনেক ডেমোক্রেসি ডেভেলপিং কান্ট্রিজতে অনেক ফিচার গুলো আছে, যেহেতু আমরা জানি ডেমোক্রেসি ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ
often struggle for survival. আজকেও আমরা দেখি একটা ডেভেলপিং কান্ট্রিতে ডেমোক্রেসি সার্ভাইভ করছে, স্ট্রাগল করছে। যেহেতু আমাদের কান্ট্রিটা অনেক সময় অনেক নানা নানা ধরনের পিপল, নানা পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট সময়ে, সময়ে আলাদা, আলাদা ব্যাখ্যা করতে থাকেন। এখানে ডেমোক্রেসি তো আছে, কিন্তু কিভাবে ডেমোক্রেসি? কোনটা ডেমোক্রেসি আছে এখানে? এটাও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। এবার কোনো সময় আমরা দেখি গভর্নমেন্ট কাছে পাওয়ার বেশি চলে যাচ্ছে, গভর্নমেন্ট নিজের অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। তাহলে এখানে কি ধরনের ডেমোক্রেসিটা রাখা হয়েছে? যেহেতু আমরা জানি কম্পিটিটিভ দিক থেকে তো সিম্পলি আমরা বলতেই পারি এখানে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি আছে, পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি আছে, রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেমোক্রেসি আমরা বলি। তাহলে ডেমোক্রেসি ডেভেলপিং কান্ট্রিতে এখনো সার্ভাইভ করার জন্য ফাইট করছে, স্ট্রাগল করছে। পিপল ডু নট ফুললি আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ডেমোক্রেসি অ্যাকচুয়ালি মিনস, রাইট? আজকে পিপল নিজেই আজকে আমাদের ডেমোক্রেসি মানে হয়ে যাচ্ছে জনগণের কাছে ক্ষমতা, জনগণের কাছে পাওয়ার। ডেমোক্রেসি মানেটাই রুল অফ দ্য পিপল। কিন্তু ডেমোক্রেসি আর তো থাকছে না, ডেমোক্রেসি আর নেই। Leaders adopt important systems, but without the necessary tradition, these systems fail to function. As David Apter puts it, the result of institutional decay. The challenge remains, how can a foreign system be made to grow in native soil? Interestingly, clever leaders often disguise their authoritarian rule as the new type of democracy. Example, guided democracy under Sukarno in Indonesia, Islamic democracy under Khomeini in Iran. Now, third wave, this 1974 to 1989, this wave appeared in the countries such as Spain, Portugal, Eastern European communist state, and the Chile. The beginning of the third wave is traced to Portugal in 1974 when authoritarian rule collapsed. The Carnation Revolution in 1974 replaced dictatorship with democracy in Portugal. In the very next year, 1975, the death of General Franco in Spain paved the way for the establishment of democracy there. In the third wave, a democracy replaced right-wing dictatorship in Greece, Portugal, and Spain. At the same time, democracy also spread to countries that is separated from the Soviet Union and to Eastern European nations. The post-communist states are also associated with the third wave democracy. Latin America, democracy emerged due to the overthrow of military generals, while in Eastern Europe, it came through the decline of communist regime. Third wave also influenced by the global trends of liberalization, privatization, globalization. Third wave also influenced by the LPG model. It also focused on the LPG model, right? Um, According to Samuel Huntington, during this wave, democracy came to about 30 countries across Southern and Eastern Europe, Latin America, Africa, and Asia. Its most significant impact, however, was felt in Eastern Europe. Notably, Huntington did not discuss the disintegration of the Soviet Union. In Asia, যখন আমরা দেখতে পারি এশিয়া during the third wave, democracy emerged in South Korea, Taiwan, and the Philippines. তাহলে সেভা Gunsky on democratic waves. Seva Gunsky, a scholar at the University of Toronto, has contributed significantly to the study of democratization, from shock to the waves, hegemonic transitions, and democratization in the 20th century, 2014. Great Powers and Democratic Reforms in the 20th Century, 2017 article, Democratic Waves in Historical Perspective on Politics, 2018. Unlike Huntington's three waves, Gunnetsky identified 13 waves of democracy, from the Atlantic wave, 1776 to 1798 in the USA, first wave to the 13th wave, Arab Spring, 2011-2012. Larry Diamond on the threats to democracy. Larry Diamond, in his book Three Winds Saving Democracy from Russian Reg, Chinese Ambitions, and American Complacency, identified three major threats to democracy: Russian aggression, Chinese ambitions, American complacency. Now, Mark Lynch, Arab Spring. The term Arab Spring was first used by the American scholar Mark Lynch.
Mark Lynch ini first time American. Listen, Mark Lynch, in his article published in Foreign Policy Journal, the Arab Spring refers to a series of non-violent civil uprisings in Muslim-majority countries of the Middle East and Arab Gulf region. The Arab Spring refers to a series of non-violent civil uprising in Muslim-majority countries. Right. The protester demanded the establishment of democratic governance and civil liberties. It began in Tunisia in 2011, where President Ben Ali was forced to step down. Soon after, Egypt's Hosni Mubarak and Libya's dictator colonial Gaddafi were also overthrown. Basically a different interpretation of the Arab Spring. Arab Spring, Ahmad Ibrahim Abu Shok, fourth wave of democratization, Seva Gunesky, 13th wave, and Larry Diamond, false start of democracy. Types of democratic C.B. Macpherson's in his book The Life and the Times of Liberal Democracy 1977. C.B. Macpherson in his book The Life and the Times of Liberal Democracy in 1977 said about there are mainly four types of democracy. They basically says about the four types of democracy. They basically says about the four types of democracy. CV McPherson's. What is it? It is a protective democracy, development democracy, equilibrium democracy, participatory democracy. Protective democracy, basically the supporter of protective democracy is the Locke, Bentham, Montesquieu. Who is the supporter of protective democracy? Locke, Bentham, Montesquieu. Democracy protects the freedom and rights on the people from the dictatorship of the state. Philosophy, limited government, constitutional, governmental, and representative government. That means protective democracy basically it support by supporters of Locke, Bentham, Montesquieu. Democracy protect the freedom and rights of the people from the dictatorship of the state. Its philosophy is the limited government, constitutional government, representative government. Whereas the development democracy, it is the main supporters of the development democracy is the Rousseau, J.S. Mill, T.H. Green. Democracy develop the personality of the individual. Democracy develop the personality of the individual. Democracy develop the personality of the individual, moral and the internal development of the individual. Democracy is not only a political system but also a philosophy and way of life. Mill's developmental democracy. De Tocqueville and Lord Bryce have also considered democracy as a way of life and a type of society. Equilibrium democracy. Some Peter, Robert Dahl, some Peter's elitist democracy. Robert Dahl's polarchy, some support for equilibrium status quo. Democracy is an electoral game in which there are leaders, businessmen, voters, and consumers. Robert Dahl's book, Preface to Democratic Theory, 1956, Who Governs, 1961, Polarchy, Participation, and Opposition. Robert Dahl's book, A Preface to Democratic Theory, 1956, Who Governs, 1961, Who Governs, 1961, Polarchy, Participation, and Opposition. Basically, supporter of equilibrium. Now the participatory democracy, Rousseau, C.B. Macpherson, Carroll, Patman, Nicholas Polanja. Participatory, the base democracy. It is participatory democracy because it is protective, development, and active participation. Opposing equilibrium, influence, influenced by ancient Athens.
influence and Athens and Rousseau. It is against the central role of the elite and the central role of the groups of the polarists. Bentley, Truman, Robert Dahl. Then supporters, transparency, accountability, direct participation, decentralization. It opposed possessive individualism. It opposed possessive individualism. Hmm. Macpherson criticism of equilibrium democracy, like the economic managerial theories, it ignores the historical determinants of effective demands, reduce serious issues, class interest in advanced countries, national aspiration in developing countries, to just one among many political pressures. Move away from democracy, most serious problems. McPherson's conclusion today capitalist individualism is retreating under the pressure of socialism and under humanitarian values. David Hill, in his book Models of Democracy, later explained McPherson model. David Hill, 2006 model. David Hill models of democracy basically there are development of democracy. Mm, Democracy book Model of Democracy 1987, revised edition 2006, total model 10, according to the third edition, classification two main parts, classical and ancient contemporary world, classical historical model from ancient time to beginning of the 20th century, from ancient time to beginning of the 20th century, classical democracy basically major thinkers, Paracelsus, Aristotle, direct participation. Citizens' main ideas of classical democracy is the direct participation, citizens' assembly, supreme political equality suitable for small city states. Then Republican. Then second is the Republican or a protective. It is in the Republican there is a two model, protective and development. Protective, they are Machiavelli. The main ideas of protective is the main ideas of protective is um, there are a lot of things I am written in my copy basically, but I am not explaining all those things. I'm just summarize the things in a short because there are at least 80 to 90 pages which will I discuss, but sort of time I am not explaining all these things. In the republic, in the protective basically, it basically focus on the protective. um, Protective, that means no one is in the live, necessary for the participate protection, protection of the interest, protection participant necessary for the protection of private liberty, separation of powers, and mixed government. Development, Jean-Jacques Rousseau, political participation is intrinsically valuable for the moral development of citizens, self-government, right? Through the general will. Then democracy, that means protective and development, protective and development. Jeremy Bentham, James Mill, Montesquieu. Democracy is a mechanism to protect citizens from rulers, authoritarianism, representative governments. Development, John Stuart Mill, democracy is a means of personality development and educated citizens, qualitative participation, protection of minority rights, direct democracy, end of politics, Karl Marx, Friedrich Engels, capitalist democracy is a deception, real democracy is possible only after revolution in classless society, where the state and politics will end and people will live without the state. Um, Then, after modern models, competitive elitism, Joseph Schumpeter and Anthony Downs, elitism. Democracy is not the rule of the people, but a competitive system for the selection of leaders. The role of the people is limited and passive. Pluralism democracy, Robert Dahl. The main thinkers of pluralism democracy, Robert Dahl and Charles Lindbaum. Power lies in many interest groups within society. Democracy is the process of negotiations and consensus among these groups. Legal democracy, basically Hayek and Nozick.
Democracy should have strong constitutional rights, rule of law, and protection of individual freedom. It is the concept of new rights. Participatory democracy, Carol Pittman, participatory democracy, Barbara Smith. The scope of democracy should extend beyond the political sphere to all areas of life, including social, economic, family life. It is the concept of new left. Democracy, Jurgen Habermas, John Rawls. Democratic decision depends on the quality of public deliberations. Now, David Hale basically says about democratic autonomy, cosmopolitan democracy. Democracy means the right of equal and active participation in all those decisions that affect people's lives in a globalized world. Democracy will have to be extended beyond the boundaries of the nation state into multi-level governance. Now, the principle of democracy, classical theory, classical democracy, protective democracy, empirical, military, distinctive. I am not going through this topic. Next, classical theory of democracy basically not go through this topic. Athenian democracy, civic republicanism. Basically, many things is mentioned in this topic. Okay, next day I will start again the after the some portions of democracy. There are a lot of democracy we will discuss. A lot of things I am not discussing now because of lot of time. Next day I will discuss. Surely next day I will again come on live. Uh, then I will discuss about the liberal democracy, Marxist democracy, elitist theory of democracy. Okay, okay. Thank you.